Hi everyone, I am Pranjal and I am a student in NIFT Panchkula and I have recently winded up my first year here at NIFT Panchkula. So finally NIFT results are out and so is your energy about ranks versus marks is also on the peak this time. So uh, सबसे पहले हम बात करेंगे इस बार निफ्ट काउंसलिंग की। उसके बाद बात करूंगा मैं अपने एक्सपीरियंस की निफ्ट पंचकुला। डेली आई हैव बीन रिसीविंग डीएम्स, प्रांजल आई हैव गॉट दिस रैंक, प्रांजल आई हैव गॉट 2000 रैंक, प्रांजल आई हैव गॉट 1500 रैंक, व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुड बी माई प्रेफरेंसेज, व्हाट शुड आई फॉलो, like which campus to go for, and etc etc. The confusion between the common merit rank and the category merit rank is the very much abrupt, like it is a core thing. So I will clear confusion one by one. So the first clearance is your category merit rank is the position among your category candidates. Like if you are from EWS category, then if you have got a category merit rank, then it means that EWS लोग जितने भी लोग थे उसमें आपकी पोजीशन क्या है, that is your category merit rank. And कॉमन मेरिट रैंक इज जितने भी लोगों ने एग्जाम दिया है उसमें आपकी पोजीशन क्या है, दैट इज कॉमन मेरिट रैंक. और निफ्ट ओनली कंसीडर्स कॉमन मेरिट रैंक while allotting the seats. But yes, there's a catch that for category reserved candidates like EWS, SC, ST and OBC candidates, even PWD, the category merit rank is taken into account to check whether the position of the respective candidate among their category. And for common merit rank matters for general category people. Also, I have been receiving queries like, Pranjal, like my parents are not allowing me to go too far away from home and they are like trying to मैनेज दैट कि आप घर के पास में ही रहो और जो निफ्ट मिल रहा है उसमें चले जाओ. सो इसमें मैं आपको एक बात बताऊंगा कि if you are getting FC K and FD etc. and the campus is mid-tier NIFT or a newer NIFT also, and if you are getting FC then it is well and good. But if the NIFT is newer and also the branch is lower, then you should also consider that you can try other options too. And your biggest dilemma, that is कि what should we prioritize, either the department or the campus. सो इसके लिए मैं आपको एक क्लैरिटी दूं अपने POV के हिसाब से. सो आपका डिपार्टमेंट आपके साथ 4 साल और पूरी ज़िंदगी रहने वाला है. सो चूज़ योर डिपार्टमेंट वाइजली. एकदम कैंपस के पीछे भी भागना सही नहीं है. यू शुड ऑलवेज लाइक ऑप्ट फॉर दैट कैंपस जहाँ आपको अपना मन का डिपार्टमेंट मिल रहा है. लाइक यू आर गेटिंग योर डिपार्टमेंट based on your interest. Like if you run towards any other thing, like if you are running towards Delhi and you are taking LD in Delhi and there is like you are having zero interest in LD, then you will end up regretting it for 4 years, and even after full life also you can regret, because LD is something which requires some patience, perseverance, and like it requires intense mehnat. And if you are not interested in LD or any other branch also, then it is waste of time and money for you. So if you are aiming for FC, then opt for FC in newer campuses also. It is not like that कि नए campuses में कुछ होगा ही नहीं. निफ्ट इज निफ्ट. नाउ द थर्ड थिंग, प्रेफरेंस लिस्ट बनाना. सो प्रेफरेंस लिस्ट आप सबसे ज़्यादा एक 3 चीज़ों का रूल मैं फॉलो करवाऊँगा, आपसे कहूँगा करने के लिए. माई रिक्वेस्ट इज़, बाकी आप फॉलो करो ना करो आपकी इच्छा है. सो सबसे पहले कैंपस अपना ड्रीम कैंपस रखिए आप अपना. लाइक इफ़ यू आर ड्रीमिंग ऑफ निफ्ट दिल्ली, देन कीप निफ्ट दिल्ली एट फर्स्ट प्लेस, even if it is not possible within your rank range. And then the campus which you are getting, realistically you can put under them which are your dream campuses. And thirdly, you should always keep some safe options, like even if cutoff goes harsh, then also you can get those seats. सो थर्ड ऑप्शन में आप अपना बैकअप ऑप्शन कॉलेजेस हमेशा ऑप्ट करके रखिएगा, जिससे कि आपको सीट मिल जाए एंड यू डोंट एंड अप गेटिंग नथिंग. एंड माई एक्सपीरियंस इज निफ्ट पंचकुला अभी तक अच्छा रहा. लाइक द कॉलेज इज़ वेरी
like smaller as compared to NIFT Delhi and NIFT Bombay. Crowd is less, so सब एक दूसरे को जानते हैं, and each and everything is like people are friendly, people are chill, and even the faculty is very supportive at NIFT Panchkula. So yes, NIFT Panchkula is really a nice campus. And placement के बारे में I don't know that much अभी a bit, as I am also in my first year and I have ended my first year in this year, this point of time only. So placement के लिए stay tuned. Hope this clears your doubts a little bit. And if you are having specific category and specific ranks in your mind and you want the answer from me, so you can comment down your doubts below. I will be happy to give each and every personalized answer to you. And thank you. Bye bye. And do subscribe my channel, like my video, and share it with your friends who want clarity over confusion.